Assalamu alaikum students. Welcome to yet another lecture in our CSS English Essay lecture series. Today the topic which we are going to discuss is very common, so to speak. I mean, whenever it comes to CSS English Essay, the most repeated words which you will be listening is that your essay should have unity and coherence. But believe me, most of the students don't know what do these two words mean, especially in the context of English essay. So today's lecture is dedicated to what is unity and coherence and some of the tools which I will be discussing, by using which you can achieve unity and coherency in your write-ups. So without further ado, let's move forward. So first of all, we need to know what unity in an essay means. Unity means that a paragraph discusses one and only one main idea from the beginning to the end. So one paragraph means one idea in English essay, uh, and no more than one idea. Okay, so this means that your paragraph has unity in a sense that it is describing only one idea. Example, if your topic sentence, remember, is the first sentence of a body paragraph, which effectively tells the examiner what you are going to discuss in the paragraph. Okay, excuse me. So it is basically the topic of the body paragraph. So if the topic sentence is about advantages of nuclear technology, discuss only that. Okay, do not discuss the disadvantages, because one paragraph is only one main idea. Each time you discuss an advantage, you begin with a new paragraph. So unity at an essay level means, at a full, when you talk about English essay and people say that essay should have unity, it means that your whole essay should be directed towards your thesis statement. Okay, that is, each and every idea in your essay should be related to your thesis statement. Okay, you shouldn't be writing irrelevant. So if you have written all of your ideas in the body paragraphs that are directly related to the thesis statement, then you can say that your essay has unity. And at the paragraph level, what is unity? At the paragraph level, unity means that one paragraph discusses only one main idea. Okay, moving on. Every supporting sentence must directly explain or prove the main idea. Okay, that is how unity is achieved. First, the topic sentence, which is the first sentence of the body paragraph, should only be introducing one idea, and then all the supporting sentences must directly explain or prove that main idea. In a paragraph, let's suppose, about federation can be strengthened by giving more powers to the provinces. So this is the topic sentence of a body paragraph. Let's suppose you will only be writing as to how devolution of powers to the provinces, sorry, this is provinces, results in the strengthening of federation. Okay, don't bring in other ideas, just try to establish the requisite link. So once you have stated in the paragraph that federation can be strengthened by devolving the power, okay, by giving the provinces more powers, then you should only be elaborating on this particular idea. Okay, you should only be proving in the paragraph that how devolving the power strengthens the federation. So you won't be mentioning any other points, like how federation can be strengthened by incorporating local bodies. Okay, or you can say, uh, by giving more resources. These are other ideas and they need to be discussed in separate paragraphs. So in this paragraph you will only be proving that this is the case, actually, that federation can be strengthened by providing more powers to the provinces. So if you have done that, you have achieved unity. Okay, so the second thing which the examiner demands is coherence. Okay, coherence. Now the word coherence literally means to hold together. For coherence in a paragraph, the sentences must hold together. That is, the movement from one sentence to the next must be logical and smooth. Now, as we just talked, that unity in the essay is at two levels. That is, the whole essay should be directed towards your thesis statement, and each body paragraph, secondly, each body paragraph should only be discussing one idea, and all the supporting sentences in a body paragraph should be proving the
topic sentence of that particular paragraph. But coherence is also at the two levels. One is at the essay level, and then it is at the paragraph level. At the paragraph level, you need to transition smoothly between the sentences, and at the essay level, you need to transition smoothly between paragraphs. And there are various techniques through which you can achieve it, but if you have done that, you have achieved coherence in your essay. And this is one of the requirements of the CSS essay examiner, and this is one of the reasons why he fails the candidates. So there are four ways to achieve coherence. We can repeat the key nouns, okay? We can use pronouns, consistent pronoun. We can use transition signals to link ideas. And lastly, we should be arranging ideas in a logical order. Now I'll be discussing each of these in more detail. Now remember, these are the tips which you can use to achieve coherence. So this is just a visual representation of how to achieve coherence in an essay. You can just pause the video and watch it. So the first technique is repeat key nouns. The easiest way to achieve coherence is to repeat the key nouns frequently in your paragraph. Read the model paragraph about gold, which is in the next, I will show you in a moment, to see how it uses this technique to smooth the flow of sentences. Let me just show you what do I mean by that you should be repeating key nouns. Here, just pause the video and read it. In this video, the word gold, which is the topic of this particular paragraph, is repeated 7 times. Why? Just to give the reader or the examiner the proof that we are talking relevant. We are throughout the paragraph talking about gold, and by using the pronoun, by using the noun consistently, this makes sure that the examiner gets he keeps on reading the paragraph while getting a feeling that we are writing something relevant. And we have used the pronoun, that is it, twice, and we have used possessive pronoun it's thrice. So all these have resulted in coherence. All these make sure that the reader and gets the message that throughout the paragraph we are talking about the subject of our paragraph, that is gold, which has two important characteristics. Now throughout our paragraph we are talking about those. You can just pause the video and watch it. And just one tip, just ignore the word gold for the moment. Once you have written once you have read the paragraph, read it again by ignoring the word gold and writing its pronoun it everywhere, and you will see that the message this conveys is that you are writing something irrelevant. Even though you will be writing the same sentences, it will convey the message that you are writing irrelevant. Okay, so just practice this to make sure that why repeating key nouns at certain intervals is necessary. Okay, now the question is how frequently you should be repeating the key nouns. Now there is no fixed rule about how often to repeat key nouns or when to substitute pronouns. I hope you understand the word pronoun. In if we don't want to use the noun, we use a pronoun. Let's suppose if Ali is a noun, then once we have mentioned Ali in a sentence, later on we can just refer to Ali by using the pronoun he. Similarly, in case of gold, we can later on refer to gold by using the pronoun it. Okay, so at the very least you need to repeat a key noun instead of using a pronoun when the meaning is not clear. Now I will just elaborate this. Now this paragraph is a practice paragraph. Okay, in the following paragraph the key noun is never repeated, so the key noun here is English. Okay, replace the pronoun it. Now throughout instead of English I have written it. Okay, now you will see after reading this that it creates a lot of confusion. Okay, by we haven't used the noun and we have used the pronoun it instead of English throughout. ठीक है, हमने इंग्लिश का जो नाउन है, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसकी जगह वो हमने नाउन कहीं भी नहीं दोबारा लिखा, शुरू में एक दफा हमने इंग्लिश लिख दिया,
कि यार इंग्लिश के बारे में बात करें, और उसके बाद हमने थ्रू आउट इट लिखा है, ठीक है। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार अगर हम की नाउन यूज ही नहीं करेंगे तो कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो आप वीडियो पॉज करो, इसको यहाँ पे पढ़ो, एंड देन आपने क्या करना है कि इट की जगह आपको जहां जहां लगे अप्रोप्रिएट है, आपने इंग्लिश का वर्ड इंसर्ट कर देना है इसी पैराग्राफ में। जस्ट पिक आउट अ रफ पीस ऑफ पेपर, आप जुबानी कर लो, इट की जगह जहां जहां आपको लगता है कि इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। सारे इट की जगह बेशक इट इंग्लिश नहीं आएगा, लेकिन जिस जिसकी आपको लगा है कि इट की जगह इंग्लिश आना चाहिए, वहां पे आप लिखो, एंड देन आप वीडियो को पॉज करके ये प्रैक्टिस करो, एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज आई हैव रिटन द सॉल्यूशन टू दिस प्रैक्टिस। ओके, now look, here in the previous paragraph we have, instead of writing the noun, we have written it. Now read the sentence. Spanish is the official language of more countries in the world, but more countries have it as their official or unofficial second language. Now here, if you use pronoun it instead of the noun English, it conveys the meaning that we are talking about Spanish and not English. Okay. So in such instances where by using the pronoun the meaning of the sentence changes, we must be using the same noun, which is the topic of the paragraph. So this, how this brings coherency, it reflects that we're talking about the same topic in a paragraph, that is English. Okay, then you should be using consistent pronouns. If you use pronouns, if you do use pronouns, then use them consistent. And you can make sure that you use the same person and same number throughout your paragraph. Okay, change of person is not allowed in English. Like let's suppose if you are using he, okay, or if you are first you are using you, then you can't write he or she. Okay, you need to use the same person which you are writing about. Then you can't change the number. Like don't change, if you are writing about someone singular, then you can't all of a sudden change it to plural. Okay, notice the changes made for, okay, this is about the next slide. Okay, just consistency of pronoun, just for a practice. Originally the paragraph was a singular. Okay, it was a student singular, and throughout the paragraph I have basically changed singular to plural. Okay, I have converted a student to students. Then you will see that throughout I have changed the tense, change the verbs. Okay, I have made it consistent with the plural noun, that is students. Just pause the video and watch it, and you will know it yourself that what do I mean by this, that there should be consistency of pronouns. Moving on, consistent use of pronouns. In the following paragraph, the pronouns are not consistent. Correct them to make this paragraph more coherent. Once again, the subject is an Olympic athlete. Okay. Now, in this paragraph, there are various mistakes of pronouns. Somewhere, you know, the pronoun of Olympic would be, singular. Somewhere it's plural. Somewhere the possessive pronoun used is wrong, and you have to write this paragraph in a manner that all the pronouns are consistent. That is, they are explaining the singular Olympic athlete. Now change, just bring out a piece of paper, change the noun pronoun wherever you think that it is wrong, and then move forward, and you will find the solution to this exercise. Okay, just pause the video, practice this, and move forward. Now here is the same paragraph. Now here you can see that this is my topic sentence. This is the previous paragraph. An Olympic athlete must be strong both physically and mentally. Now remember, in the red, now just see the red things. Okay, I have changed the pronoun throughout. An Olympic athlete. Now here, I can't use you. I will be using pronoun he or she. Then I can't use they.
I will be using he or she trains, then he or she, that was okay, then that was okay, and then once again they is written, that is also wrong. Now remember that there are certain keywords in this topic sentence: strong, physically, mentally. I have used these words throughout my paragraph to indicate to the examiner that I am talking about the same thing, that is an Olympic athlete must be strong both physically and mentally throughout my paragraph. And this will give a feeling to the examiner that my ideas are coherent. Okay. Now, strong, for the word strong, I have written strong, tough, inner strength, and all these things indicate that I'm talking about the adjective of Olympic athletes, that they are strong. Okay. Now, these words which are highlighted in, I don't know, it's navy color sort, these first of all, furthermore, in addition to, being, also, finally, these are linking sentences, these are linking phrases, they are linking. So once again they are also acting to bring coherence in our paragraph. The paragraph, the sentences in the paragraph are transitioning smoothly from one sentence to another. Okay. And I have used different transitions. The techniques which I have used is that I have used different transitions, I have repeated the noun, okay, and I have repeated the pronouns. So why I showed this exercise to you, because while reading the write-ups, I came across some write-ups where where candidates simply ignore the noun which they mentioned in the topic sentence. Let's suppose they are talking about the governance crisis. They are talking about governance crisis, and the main idea of their paragraph is that there is governance crisis because of you can say, let's suppose, corruption. So once they have mentioned corruption in the topic sentence, they altogether miss this word corruption in their whole paragraph. So that just gives a feeling that okay, that student has digressed from the topic, he hasn't understood the topic, or he's writing something irrelevant, even though he might be writing something relevant. So do repeat key nouns from time to time. Of course, you won't be just repeating the key noun in every sentence, you will also be uh, writing pronouns, but there needs to be a balance. Okay. Moving on, the fourth main tool which you can use to achieve coherence is by using transition signals to link ideas. Now, transition signals are expressions such as first, finally, however, and they can be phrases like in conclusion, on the other hand, and as a result. They can also be subordinators like when, although, they can be coordinators, they can be adjectives, they can be prepositions, okay, which function as. Now, these are basically I can't discuss them in this lecture because they fall in the domain of English grammar. And I suppose that you are well aware of these terminologies since you are sitting in English, since you're sitting for CSS English Essay and CSS exam in general. So you must know these terminologies, okay? I will be moving forward by assuming that you know these. Now, transition signals. Transition signals are words such as first, second, next, finally, therefore, however, or phrases such as in conclusion, on the other hand, as a result. Think of transition signals as traffic signs that tell your reader when to go forward, turn, slow down, and stop. Okay. In other words, they tell the reader when you are giving a similar idea, that is, you write similarly, moreover, furthermore, in addition, or you are giving an opposite idea for which you can use phrases like on the other hand, however, in contrast, or you are giving an example for which you can write for example, or you are giving a result, you can write as a result, or a conclusion. Using transition words as a guide makes it easier for the examiner to follow your ideas. Transition words give your paragraph coherence. Okay, let me just move forward. Look, this is a visual representation. Okay, transition words act as traffic signs. Okay, they tell the examiner when to turn around, when to slow down, when to stop. I mean, if you're writing about something, you are let's suppose you want the examiner to you want to give the examiner an illustration, so you won't just write the illustration, you will write some transition signal, transition phrases that in for illustration purposes it can be said that this,
Okay, if you want to bring an opposite idea, you can say that uh, you can bring a contrast. You can use any word like in contrast. It can be said that if you want to quote an example. So similarly, these are the things. I will be sharing a list of these shortly. Now each transition signal have a special meaning. Each shows how the following sentence is linked to the preceding one. For example, tells you that an example of a preceding idea is coming. Remember, these are linking your paragraph, and linking your paragraph brings coherency. Two tells you to look for two different reasons. First tells you, second tells you. Just you can just read it. Pause the video and read it. Okay. So more about transition signals. Transitions strengthen the internal cohesion of your writing. Using transitions makes it easier for the reader to follow your ideas. Okay, you're guiding your examiner, you're guiding your reader that now you're going to present an example. Now you're going to bring something, a counter argument. Now you're going to elaborate further by using some key phrases, key signals, key transition words. Okay, so you're guiding your examiner that what you're going to talk about. सो यू नो अगर आप अपने एग्जामिनर को स्मूथली ड्राइव करोगे, उसको बताओगे कि यार अब मैं ये बात करने जा रहा हूँ, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली कोई बात कर दो, जस्ट आपको कुछ ट्रांजिशन सिग्नल्स एंड फ्रेजेस यूज करने हैं, ठीक है? उससे आपकी राइटअप में कोहिजन आ जाएगी. नाउ ट्रांजिशंस हेल्प कैरी ओवर अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, और फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर. ओके, लेट्स सपोज आपने एक पैराग्राफ लिखा, एक सेंटेंस लिखा, यू इफ यू वांट टू फर्दर एलैबोरेट इट, यू कैन से दैट फर्दर मोर इट कैन बी सेड दैट. सो ये एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक ट्रांजिशन हो गया. आपने एग्जामिनर को कुछ ज्यादा बताने से पहले ही बता दिया बाय यूजिंग द वर्ड फर्दर मोर कि मैं कुछ एडिशनल बात करना चाह रहा हूँ. Then you can move from one paragraph to another by saying that suppose if the first paragraph was about uh, let's suppose we are talking about causes of population growth and the first paragraph was about illiteracy, then we can start the second paragraph by stating that in addition to illiteracy, another factor which results in meteoric population growth is lack of awareness. तो अब हमने देखें एग्जामिनर को एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक कितने स्मूथली ट्रांजिशन करवाया कि हमने बात की कि अच्छा पिछले पैराग्राफ में हमने ये बात की थी बट उसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं. नाउ फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट effects of energy crisis. Okay, now you want to write some paragraphs on recommendations that how these effects can be mitigated. So you can start something like that. Though the effects of energy crisis are very great and multifarious, this doesn't mean that this problem is insurmountable. There are various remedies which, if applied properly, can easily result in the solution of energy crisis. So मैंने एक आइडिया से दूसरे आइडिया, यानी मैंने अपने एस्से के एक एक उसके पार्ट से दूसरे आइडिया पर तक जाने के लिए भी मैंने कुछ ट्रांजिशन लाइंस यूज की हैं ताकि एग्जामिनर को मैं बता सकूं कि यार अब मैं इफेक्ट्स की तो बात कर चुका हूं, अब मैं रिकमेंडेशंस की तरफ जा रहा हूं. ये एक वर्ड नहीं है, इस तरह के आप कुछ भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, बट आप प्लीज ऐसा यूज लाजमी करें. एग्जामिनर को आप स्मूथली इसको ड्राइव करवाएं, ठीक है, कि मैं यार अब ये बात करने जा रहा हूँ, अब ये बात करना चाह रहा हूँ. एंड दैट इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन. यही ट्रांजिशन का पर्पज होता है. सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन: सेंटेंस कनेक्टर्स and clause connectors, and there are some other things. I don't want to go into details, but I will be sharing all those. Now within sentence connectors there can be transition phrases and there can be conjunctive adverbs. Within clause connectors there can be coordinating conjunctions and there can be subordinating conjunctions, and there are some other categories also. But I'm supposing that since you are a CSS student and you intend to appear, you must be aware of these grammatical terminologies, because this essay, these lectures are essentially about essay and not about grammar. Okay, so let's talk about transition sentence connectors. And in sentence connectors, we are first talking about transition phrases.
they can appear in the beginning, middle, or end of the sentence, and a comma is needed. This is very important. You need to punctuate it. Let's see an example. Now here we can use, for example, anywhere, like we can cut this, we can cut this. Now let's suppose we have used a transition phrase. For example, comma, the Baltic Sea in the northern Europe is only 1/4 as saline as the Red Sea in the Middle East. This is one example. Now, as I have said, that transition phrases can be used in the beginning, middle, or end. Now, if we cut out this and this, we are using it in the middle. Just read this sentence and you will see that it is perfectly making sense here. Okay. And similarly, if you cut out the first and the second transition phrase, you will notice that that will also perfectly make sense. Moving on, talking about conjunction adverbs, often used with a semicolon and a comma to join two independent clauses. Now here, I have noticed students making a lot of mistakes here. Let's just read this example. Some English words do not have exact equivalents in other languages. For example, there is no German word for the word for the adjective fair. Now here, I have seen students using comma. That is totally wrong, because if you are joining two independent sentences, just note that this is an independent sentence. I mean, it can stand on its own. अगर आप दूसरे वाले को इग्नोर भी कर दो तो ये सेंटेंस परफेक्टली इट मेक्स सेंस. इसी तरह अगर आप पहले वाले को इग्नोर भी कर दो तो सेकंड वाला परफेक्टली मेक्स सेंस. ओके. सो ऐसे दो सेंटेंसेस जो कि अकेले में भी परफेक्टली मेक सेंस कर रहे हो, तो आप उनको जोड़ोगे तो आप कभी भी कॉमा नहीं डालोगे. यू विल ऑलवेज पुट इन अ सेमी कॉलन, देन यू विल यूज अ कंजंक्शन एडवर्ब, लाइक फॉर एग्जांपल, देन यू विल पुट अ कॉमा एंड देन यू विल राइट द नेक्स्ट सेंटेंस. ओके. सो ये पंक्चुएशन के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. आप लोगों ने ये पढ़ने हैं, इसके बगैर आपकी कभी भी रिटर्न एक्सप्रेशन अच्छा नहीं हो सकता. देन हम क्लॉज कनेक्टर्स की बात करें, उसमें पहला आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, used with a comma to join two independent clauses and to form a compound sentence. Example, in a matriarchy, comma, the mother is the head of the family and all of the children belong to her clan. अब इसमें कॉमा यूज किया हमने, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया. रिमेंबर, ग्रामर में 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जिनका मैं आगे जाके जिक्र भी करूंगा. आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा. नाउ ये 7 कंजंक्शन है जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो ग्रामर में यूज होते हैं. ठीक है. हमेशा इनसे पहले कॉमा आना है. ठीक है. कभी भी आपने नॉर, बट, और, येट, सो से पहले हमेशा कॉमा लगा के अगला सेंटेंस स्टार्ट करना है. इस मिल्क में भी ये एंड के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, लेकिन अगर आपको लिस्ट बयान करने जा रहे हो तो उसमें 2 अगर होगा तो आप बेशक लिस्ट ना लिखो, लेकिन 2 से ज्यादा आइटम्स मेंशन करोगे तो आप कॉमास भी बीच में लगाओगे. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एंड. सो पॉज द वीडियो, यू कैन राइट दिस डाउन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. अच्छा, ये एक बिल्कुल सिंपल सटल सा एक डिफरेंस है. आप इसको खुद पढ़ लो वीडियो पॉज करके, आपको समझ आ जाएगा कि येट और बट में फ़र्क क्या है. ठीक है. अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं. आप ऐसा करना कि आपको खुद ही पता चल जाएगा. आप बट को इस सेंटेंस में करके चेक करना और येट को इस सेंटेंस में यूज़ करके चेक करना बट की जगह, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि व्हाट डज़ ऑल दिस मीन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है. आपको खुद पता चल जाएगा कि येट कब यूज़ करना है एंड बट कब यूज़ करना है. Now, we talked about coordinating conjunctions. Now we will be talking about subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions are used to introduce a dependent clause, which is joined to form a. Now, dependent clause क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. वाई? बिकॉज अगर आप अगले वाले कॉमा के बाद जो लाइंस आ रही है उसको इग्नोर कर दो तो ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा. ऑल्दो द कंपनी सेल इंक्रीज लास्ट ईयर, अब हमें नहीं पूरी बात पता चल रही. सो दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? अगर वो एक क्लॉज है, अब उसको आप अकेले भी छोड़ दो तो वो मीनिंग कन्वे करेगी, लेकिन यहाँ पे जो मैंने
सर्कल किया है, अकेले में कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रही। इसके कन्वे करने के लिए, पूरा मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ जोड़नी पड़ेगी। अब ये देखें, ये वाला जो सेकंड वाला है, दिस इज कन्वेइंग द मीनिंग परफेक्टली, इट्स नेट प्रॉफिट्स डिक्लाइन। पता चल रहा है कि हम किसी चीज के बारे में बात करें जिसके नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुए। सो जब हम डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, और हम जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखते हैं तो हम कॉमा डालते हैं बीच में, ठीक है। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या यूज हो रहा है, ऑल दो, कॉमा डाला देन। लेकिन अगर हम जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले यूज करते हैं एंड देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं टू ब्रिंग कोहेरेंस, तो तब कॉमा नहीं आएगा। ये ग्रामर के रूल्स हैं, इनको आप डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आई डोंट हैव टाइम कि मैं आपको सारी ग्रामर सिखा दूं। द आइडिया वॉज कि आप लोगों को पता चल जाए कि यार क्या क्या, किन किन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, आप अपने एसे की कोहेरेंस इंक्रीज कर सकते हो, अपने एसे में कोहेरेंस ला सकते हो। नाउ दीज आर सम अदर, बट द मेन इशू इज ये चले आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल थिंग यहाँ पे है ये। नाउ दीज आर द सम कॉमन ट्रांजिशन सिग्नल्स, आप इनको नोट डाउन कर लो अपनी किसी नोटबुक पे, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस अ सिमिलर एडिशनल आइडिया, आप ये कंजंक्शन यूज करते हो, ठीक है। ये आप ट्रांजिशन यूज करते हो। टू कंपेयर थिंग्स यू यूज दिस थिंग्स, टू इंट्रोड्यूस एन ऑपोजिट आइडिया एंड टू कंट्रास्ट थिंग्स, आप ये यूज करते हो। जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट दिस टेबल डाउन, एंड इसको बार बार आप इसको रेफर बैक किया करो, ताकि आप रिडंडेंसी ना हो आपके राइटअप में, आप ये डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सको। आप वीडियो पॉज करो, ये नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, आप वो भी नोट डाउन कर लो। ये these are some more. To introduce an example, you can use these transitions. To emphasize, you can use this. To explain and restate, you can use this. To introduce an alternative, you can use this. Moving on, आप इसको भी pause करके note down कर लो. To indicate time, you can use these transitions. To signal chronological order, you can use this. Okay, pause करके ये note down कर लो आप लोग. Then moving on, अच्छा, to indicate order of importance, you can use these transitions. To introduce a cause or reason, you can use these transitions. Once again, pause this and note down, and I'll be moving forward. This once again, to introduce an effect or result, you can use these. To conclude, you can use these. Okay. Now, the last thing which I mentioned to achieve coherency in your write-up was to arrange your ideas in a logical order. Now, in addition to using transition signals and repeating key nouns and pronouns, another way to achieve coherence is to arrange your sentences in some kind of logical order. Your choice of one kind of logical order over another will depend upon your topic, okay? Now, what do I mean by this? Let me explain. There are three ways, okay, in which you can logically arrange your ideas to bring coherence in your write-up. Chronological order. Let's suppose you are giving background about some topic, okay, like you are giving uh, information about energy crisis, let's suppose. So you can state by giving historical background that it started in these years, okay, then it aggravated and that is resulted in this. So you can explain a sequence of events in a step-by-step process. Then there can be logical division of ideas, okay. A topic is divided into parts and each is discussed separately. For example, you can discuss the effects of energy crisis under different heads like इकोनॉमिक इफेक्ट्स, पॉलिटिकल इफेक्ट्स। आप इसके आउटलाइन में भी इस तरह इनके नीचे सब पॉइंट्स बना लोगे, और ऐसे में भी फिर आप अलग अलग एक लॉजिकली भी लिखोगे। पहले आप सारे इकोनॉमिक्स के पैराग्राफ लिख दोगे, फिर आप पॉलिटिक्स के लिख दोगे। सो दिस इज वन वे ऑफ लॉजिकली डिवाइडिंग योर आइडियाज। देन अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है, ये हमारे CSS कैसे में नहीं आता, बट दिस इज वंस अगेन अ मेथड टू लॉजिकली अरेंज योर आइडियाज. Punctuation, once again, very important when it comes to achieving coherence in your essay. Okay, punctuation is critical part of all the writing. अब सिंपल आप पंक्चुएशन की एग्जांपल बहुत सी हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल एक कन्वे करने के लिए आप जस्ट ये पढ़ लो। सेम सेंटेंस है, सिर्फ कॉमास को मैंने आगे पीछे किया है और देखेंगे कितना डिफरेंस आ गया है। वुमेन कॉमा विदाउट हर मैन इज नथिंग, इट मीन्स के
औरत जो उसका विदाउट हर मैन कुछ भी नहीं है, जबकि हेयर वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग कन्वे हो गया है कि यार औरत के बगैर मर्द कुछ नहीं है, जबकि पहले में दिया हुआ है कि मर्द के बगैर औरत कुछ नहीं है। सेम चीज लिखी हुई है, सिर्फ कॉमास का मैंने सीक्वेंस चेंज करे, कॉमास को मैंने डिफरेंट जगह पे प्लेस कर दी। तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस। लोग कैंडिडेट्स इतना मिस यूज करते हैं, इतना उनको पता ही नहीं होता कॉमास का, कि उनका सारे के सारे राइटअप का मीनिंग चेंज होता है, उनके सारे सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज हो जाता है। सो प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पंक्चुएशंस। सिर्फ आपको ये पंक्चुएशंस पता ही नहीं होना चाहिए, इनका यूजेज भी पता होना चाहिए। और इनमें भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है यार, बस एक ये कॉमा इंपॉर्टेंट है, कॉलन इंपॉर्टेंट है, डैश इंपॉर्टेंट है, पीरियड का तो पता ही होना चाहिए आपको। अच्छा, एलिप्सिस इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अलावा सेमी कॉलन इंपॉर्टेंट। बस इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पता इस सेंस में कि आपको प्रैक्टिकल यूजेज पता होना चाहिए कि लाइक अगर कॉलन में डाल सेमी कॉलन में डाल रहा हूँ, तो ये इसके हमेशा इससे पहले भी एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, इससे बाद में भी एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। इस तरह के डिफरेंट रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। You can just pause and read this. Okay, I will be moving forward. How to achieve clarity in your write up? Make sure every pronoun has a clear antecedent. ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। अब Ali picked up the wrench, removed the nut and handed it to Basit. अब यहाँ पे जो है प्रोनाउन इट है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ अपनी उर्दू जुबान में। इससे हमें नहीं पता चल रहा कि ये इट नट के बारे में बात हो रही है या रेंच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको कुछ और लिखना पड़ेगा ताकि मीनिंग कन्वे हो, ठीक है। आप क्या लिख दोगे, लेट्स सपोज अली पिक्ड अप द रेंच, रिमूव द नट एंड हैंडेड द टूल टू बासित। अब हमें पता चल रहा है कि उसने बासित को टूल पकड़ाया, दैट इज ही हैंडेड ओवर द रेंच टू द बासित। सिमिलरली कंप्लेनिंग एंग्रीली फहद रोट इट अप एंड सेंड इट टू द न्यूज़पेपर। हमें नहीं पता उसने क्या लिखा है, कुछ नहीं हमें समझ आ रहा, जबकि इसका इम्प्रूव्ड वर्जन हो सकता था एंग्रीली फहद रोट अप हिज कंप्लेंट एंड सेंट इट टू द न्यूज़पेपर। अब हमें पता चल रहा है कि इट जो है, जो एंटीसीडेंट है, इसका नाउन कौन सा है, कंप्लेंट। हमने पीछे पढ़ा था एवरी प्रोनाउन हैज अ क्लियर एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब कि ये प्रोनाउन हो गया, सॉरी, ये जो है टूल हमारा प्रोनाउन हो गया, जबकि इसका एंटीसीडेंट रेंच है। इधर यहाँ पे प्रोनाउन हमारा इट हो गया और इसका एंटीसीडेंट कंप्लेंट है। सो इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके राइटअप से समझ आना चाहिए कि किस बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको वेग चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ इनडेफिनिट इट एंड दे, ठीक है। ये आप पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो आप लोग, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। आई डोंट हैव टू एलैबोरेट इतना मुझे ज़्यादा, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। आप इसको पॉज करो एंड यू मूव ऑन। सेकंड, आप इसको एलिमिनेट द वेग इट दे एंड व्हेन एंड इज वेयर नेसेसरी। आप इसको भी पहले आप खुद देख लो इन चीज़ों को, ठीक है। एक रफ पेज निकालो, उस पर आप देखो कि यार इट दे इज व्हेन की जगह आप कैसे इन सेंटेंसेस को आसान बना सकते थे, ठीक है। और पॉज करो भी, आप स्टार्ट करो एंड देन आई विल शो कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। नाउ मैं सिर्फ लास्ट वाला बता देता हूँ। इन द रिजीम ऑफ भुट्टो दे पास्ड अ बिल। यार इसको सिंपल हम लिख देते हैं ना, भुट्टो रिजीम पास्ड अ बिल। सिंपल, कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। वंस अगेन आप पास को, आप इसको पॉज कर लो, अगर आपको मजीद कंफ्यूजन है तो आपको दोबारा पढ़ लो। देन सेंटेंसेस दैट आर टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट। अच्छा, इसमें क्या है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं बहुत लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, लाइक द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो है बहुत ही लंबा है और ये इट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेकिंग सेंटेंसेस इनटू टू कैन मेक द राइटिंग क्लियरर एंड इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस के दो हिस्से कर दिए। अब इट इज सेल्फ एविडेंट, आप पहले वाला भी पढ़ लो और दूसरे वाला भी पढ़ लो कि कौन सा सेंटेंस अच्छा मीनिंग कन्वे कर रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं सेंटेंस, इतना लंबा लिख देते हैं, 4 से 5 लाइनों का सेंटेंस बन जाता है, और शुरू में क्या स्टूडेंट ने बात की होती है वो एंड पे जाके पता ही नहीं चलता कि बात क्या हो रही थी। सो इतने लंबे सेंटेंसेस ना लिखें प्लीज। हाँ, बहुत छोटे भी नहीं लिखने चाहिए। लेट्स सपोज अब ये सेंटेंस, ये आप पैराग्राफ पढ़ो, आपको समझ लग जाएगी
कि कितना एक चार्लिश सा लग रहा है इतना छोटा सेंटेंसेस लिख के, ठीक है। अब इसका एक मैं इम्प्रूव्ड वर्जन लिखना चाहूँ तो वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में, अच्छा, टू इम्प्रूव द अबव पैराग्राफ हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन जॉइन दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग कनेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन यूज कनेक्टर्स। ये देखिए वही वही सेंटेंसेस हैं। अब मैंने इसमें कौन कौन से कनेक्टर यूज किए हैं, बिकॉज, बट, व्हेन। अब देखिए मेरे सेंटेंसेस थोड़े लंबे भी हो गए हैं और एक मेच्योर्ड राइटिंग लग रही है। A good style, now this is very very important. A good style often involves the combination of both short and long sentences. But बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, बहुत लंबे भी नहीं होने चाहिए, आपका मीनिंग क्लियरली कन्वे होना चाहिए, ठीक हो गया। मूविंग ऑन। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट और राइटअप्स में अपनी गलतियां करते हैं कि यू नो रेपिटेशन करते हैं अपने राइटअप्स में, लाइक 12 मिडनाइट। यार इसका सिर्फ मिडनाइट लिख दो, यू डोंट हैव टू राइट 12। मिडनाइट का मतलब ही यही है कि रात के 12 बजे हैं। 3 AM इन द मॉर्निंग, अब इसमें यार सिर्फ 3 AM लिख दो। सिंपल है, विजिबल है, ऑब्वियस है कि यार 3 AM का मतलब क्या है कि मॉर्निंग में होते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब ही पता है कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि करीब करीब होना, तो उसको क्लोज क्यों लिख रहे हो। सो इसी तरह ये लिस्ट है, आप पढ़ लें पॉज करके, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस नेचर की मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ। देन वंस अगेन द सेम, इसको भी आप पढ़ लो। देन वंस अगेन द सेम, स्टूडेंट जो रेपिटेशन करते हैं, ठीक है। देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड, इसको भी आप पढ़ लो, ठीक है। इफ यू फील कि इट्स इंपॉर्टेंट तो आप इसको नोट डाउन भी कर लो। देन वंस अगेन दिस, हिस्ट्री है तो यार हिस्ट्री का मतलब ही पास्ट हिस्ट्री है ना, ये देखो। पास्ट हिस्ट्री लिखने का क्या जरूरत है, सिर्फ हिस्ट्री लिखो, हिस्ट्री का मतलब ही आप पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये देखो, पास्ट एक्सपीरियंस लिखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस लिखने की क्या जरूरत है यार, एक्सपीरियंस हमेशा पास्ट में ही होता है ना, कभी फ्यूचर में तो नहीं हुआ, ठीक है। अब डिफरेंट वेरिएशंस, वेरिएशंस का मतलब ही होता है कोई डिफरेंस है, तो ये चीज रिपीट ना करो, इन चीजों को आप पॉज करके इनको फर्दर देख सकते हो। अच्छा, ये कुछ प्रैक्टिस है जी आपको कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी सिमिलर सेम चीजें यूज कर रहे हैं। द क्लर्क रिव्यूड द स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग फॉर एरर्स। अब इसमें सिंपल अंडरलाइन वर्ड को आप रिप्लेस कर दो चेकिंग से। द क्लर्क रिव्यूड द स्टेटमेंट चेकिंग फॉर एरर्स, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग क्या मतलब, इसको सिंपल इससे। अब सेकंड वाला देखें, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट नो द एब्सोल्युटली बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर। अब यहाँ पे रेपिटेशन आ रही है, अंडरलाइन लाइनों पे गौर करें बस। अब इस पे सिंपल हम लिख सकते थे, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट नो द फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर। फंडामेंटल्स का मतलब ही यही है, बेसिक, एब्सोल्युटली बेसिक, ठीक है। तो रेपिटेशन ना किया करें। इसी तरह आप वीडियो पॉज करें, आप बाकी के 3 में देखें कि क्या गलती है, रेपिटेशन है। आप इस अंडरलाइन वर्ड की जगह कोई एक वर्ड लिख दें, या जैसे आपको लगे कि रेपिटेशन ना आए, आप पॉज करें, लिखें, एंड देन आई विल शो यू द सोल्यूशन। सो आज के लेक्चर का जी रिव्यू क्या है, व्हाट डिड वी स्टडी टुडे, दैट एवरी गुड पैराग्राफ शुड हैव बोथ यूनिटी एंड कोहेरेंस, ठीक है। वंस अगेन यूनिटी क्या दी कि एक पैराग्राफ में आप एक ही आइडिया के बारे में बात करो, और कोहेरेंस क्या है कि आप एक पैराग्राफ में स्मूथली ट्रांजिशन करो बिटवीन सेंटेंसेस, एंड अपने पूरे के पूरे एस्से में स्मूथली ट्रांजिशन करो बिटवीन पैराग्राफ्स। एंड यूनिटी का क्या था कि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया लिखो, जबकि आपके सारे पैराग्राफ्स थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, दैट इज यूनिटी। हमने बात की कि हम यूनिटी कैसे अचीव कर सकते हैं, by discussing only one idea in a paragraph and always staying on the topic in your supporting sentences. Supporting sentences को हमेशा उनमें मेन आइडिया की ही बात करनी है। कोहेरेंस कैसे अचीव कर सकते हैं, by repeating key nouns, by using consistent pronouns, by using transition signals, and by writing our essay in some logical order. Then मैंने आपको कुछ ट्रांजिशन सिग्नल्स की बात की थी, ओके। वंस अगेन ये वही चीज़ है, आज के लेक्चर का रिव्यू है कि आज हमने क्या पढ़ा, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। नाउ आई होप टुडेज लेक्चर वाज यूजफुल कि यूनिटी एंड कोहेरेंस क्या होती है आप लोगों को पता चलेगा, और कैसे हम ये चीज़ें दो अचीव कर सकते हैं जो कि एग्जामिनर मांगता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर कैंडिडेट्स को फेल करता है। सो आई होप आज के लेक्चर से आपको काफ़ी
मदद मिली होगी. I hope you people have learned a lot from today's lecture and you will try to incorporate these things in your write-ups, and next time आप लोग write-ups में ये mistakes नहीं करोगे. Best of luck for the exams. Allah Hafiz for today.